Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as per your request, this is the third part of the most expected question of ICMR examination. So stay tuned and do watch the video till the end because you will get so many flashcards and important question that can be definitely asked in this exam. And if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. First of all these questions are not PYQs. These are the new questions and the most expected one because as per the previous year examination paper, definitely you must be aware about the basics that is asked in the examination. यानी unlike CSIR आपको यहाँ पे basics पे focus करना है and general biology पे focus करना है because अगर आपने previous year questions देखे होंगे तो you must be aware कि question किस type से आ रहे हैं. Question general biology के किसी भी branch से आपको देखने को मिल सकते हैं. So let's start with some flashcards. So first let's discuss the histamine. So histamine is chemically a biogenic amine. यानी अगर इसका chemical nature पूछेगा so it is a biogenic amine with paracrine and neurotransmitter function. Once released it can act on different target cell including the H1, H2 and H3. And जब भी ये target cell से bind करता है it cause so many allergic responses. And कैसे कैसे allergic responses हो सकते हैं? It can cause the constriction of the airways and also it enhances the fluid secretion in our respiratory passage and therefore it is also responsible for the dilation of the blood vessels. So all these consequences are caused due to the release of the histamine and its binding onto the target cell that is H1, H2 and H3. तो ये हो गया histamine. तो histamine is responsible for allergic responses. So if it triggers the allergic responses in our body, we need to stop it because this will cause so many discomforts and many more disorders in the body. So therefore antihistamine दिया जाता है to stop the allergic responses caused due to the release of the histamine. So to stop the allergic reaction, basically antihistamines are given, and how it works on blocking the receptors of histamine that is H1 or H2. So classic H1 receptor antagonist includes the diphenylhydramine hydrochloride, which is also known as the Benadryl, and dimenhydrinate. So these two are the receptors which can be blocked by the two antagonists mentioned. So you have to remember the class H1 receptor antagonist and class H2 receptor antagonist, that is the cimetidine or the Tegamet and ranitidine, which is commonly known as Zentek. Now some more flashcards including the easiest one. So ornithology. So ornithology is the study of birds, and malacology is the study of mollusks including the snails, and ethology is the study of animal behavior, that in different habitats how the animal behave within its community and within its population. And apart from that, myrmecology is the study of ants. Herpetology is the study of reptiles and amphibians. All these flashcards will be available in my Telegram channel. So if you have not still joined the channel, you can join it. I will provide the link in the description box. And ichthyology is the study of basically fishes, including the bony fishes, cartilaginous fishes and jawless fishes. So you have to remember all these important flashcards because this can be asked in this examination. Now let's solve some question. So let's solve some question. In which of the following cloaca, which is the posterior opening that serves as the only such opening for the intestinal, reproductive and urinary tract is present? यानी cloaca जो है वो एक single opening की तरह काम करता है. In which of the following given option? Like it is the only opening for the intestinal, reproductive and urinary tract. So is it aves यानी कि birds, aves and amphibians, aves, amphibians and reptiles, pisces, aves, amphibians and reptiles? So the correct option is aves, amphibians and reptiles. So basically cloaca is an orifice. So basically this orifice acts as a single opening for different function like the digestive, reproductive and urinary tract, and it is the function of birds, amphibians and reptiles. Now second question. Which of the following branches of biology is concerned with the effects of radiation on the organisms? Actinobiology, cryobiology, cytogenetics or aerobiology? So the correct answer is actinobiology. So actinobiology deals with the study of radiation on the living organisms.
And cryobiology is the branch of biology which deals with the preservation of tissues and cells at cold temperature. So cryo जहाँ पे भी लगा हो, it is related to the low temperature. Now cytogenetics. So basically cytogenetic, it is a branch of genetics in which it is studied that how the chromosomes relate to the cell behavior, including the behavior of chromosome in mitosis and meiosis. Cytogenetics involves testing methods including the samples like tissue, blood or bone marrow, and they mainly study the behavior of the chromosome, that whether the chromosome is broken, missing, or either it is rearranged, or whether it has an extra segment of chromosome, or whether it is deleted. So all these chromosomal behavior is studied in the cytogenetics. Now aerobiology. So basically aerobiology is the study of production, dispersal and effect of biological particles and organisms. Like bioaerosols का effect देखा जाता है atmosphere में जो present होते हैं. That atmosphere can be bacteria, fungal spores, pollen grains. As you all know, pollen grains cause severe allergic responses in some patients. And अगर छोटे से insects हैं, viruses हैं, plant का कोई particle है, all these things जो भी इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनके बारे में पढ़ना इज बेसिकली एरोबायोलॉजी. सो आई होप आपको चारों समझ में आगे होंगे एंड इनमें से कोई भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन? सो विटामिन ए, बी, के एंड डी. So you must be aware that vitamin B is a water soluble vitamin. So basically it is not a fat soluble. A, D, E and K are fat soluble and vitamin B is a water soluble vitamin. Now next question, which waves are used by bats to communicate with each other? Infrasonic, audible sound, ultrasonic, picasonic sound wave. So it is the ultrasonic sound waves that is used by the bats to communicate with each other. Ultrasonic sound waves have frequency of more than 20 kilohertz, and this ultrasonic waves is defined as the inaudible sound with high frequency for human beings. So basically these sound waves which is not intended to be heard is called the ultrasonic waves. Now one important question, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ईजी लगते हैं, येट इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ बेसिक बायोलॉजी. लाइक अगर आपको पता ही नहीं है कि लुई पाश्चर ने क्या काम किया था, उन्होंने वो क्या करते थे, वो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे या पॉलिश थे, फ्रेंच थे. सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर्ड व्हेन वी गो फॉर द बेसिक स्टडी. लाइक जब हम अपनी NCERT बुक्स पढ़ते हैं तो कभी भी किसी अगर बायोलॉजिस्ट का नाम देता है तो हमेशा उनके बारे में लिखा रहता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी स्टडीज़ कहाँ से कंप्लीट की थी, थोड़ा सा उनके बारे में हिस्ट्री दिया रहता है. तो अगर आप ICMR के लिए अपीयर हो रहे हैं तो ट्रस्ट मी, कोई ना कोई साइंटिस्ट के बारे में, कोई डिस्कवरर के बारे में, किसी बायोलॉजिस्ट के बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाएगा आपको. सो बेसिकली लुईस पाश्चर वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज वेल एज रिनाउंड केमिस्ट. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज रिलेटेड टू कार्सिनोलॉजी? So now many of you will suggest that carcinology is the study of cancer. So no, it is not the study of cancer. The study dealing with different kind of cancer and their treatment is known as the oncology, but not the carcinology. So basically carcinology is the study of crustaceans like crab. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्सिनो है इट मीन्स कि कैंसर. नो, इट इज़ नॉट. इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस. Now next question, pyrenoids are the center of formation of enzymes, proteins, fat, starch. So basically pyrenoids are the center for the formation of starch. Now next question, in which form is glucose stored in our body? Insulin, glucose, glycogen, fat. So basically in animal body glucose is stored as glycogen. So it can also be asked like the structure of glycogen. So basically glycogen is a homopolysaccharide. It means its monomers are made up of only glucose residue that are linked together by alpha 1,4 glycosidic linkage. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बीटा 1,4 लिंकेज वाला नहीं है. इट इज़ दी अल्फा 1,4 लिंकेज homopolysaccharide that is made up of so many alpha D glucose residues. Now next question, which of the following organism is used in alcoholic fermentation? Pseudomonas, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium. So it is the
Saccharomyces that is used on an industrial scale for the alcohol production. Now next question. Dash cell lines the blood capillaries. Alpha cells, endothelial cells, oxyntic cell, none of the above. So it is the endothelial cell that lines the blood capillaries. Endothelial cells are basically the major type of cell lining inside the blood vessels and also in the lymph vessels. यानी blood vessels के साथ साथ lymph vessels में भी आपको देखने को मिलेंगे and heart में भी देखने को मिलेगा. So they are the fundamental component of the vascular system and इनके पास में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने का इनको रोल दिया गया है. लाइक दे कंट्रोल द ब्लड फ्लो. एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज एंड रिलीज सो मेनी फैक्टर दैट रिलैक्स और कंट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स. यानी ये बहुत सारे फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जिससे कि ब्लड वेसल या तो कंट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है एंड देयरफॉर ब्लड फ्लो को ये इन्फ्लुएंस करते हैं. इसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स ऑल्सो रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन द थ्रोम्बोसिस एंड हीमोस्टैसिस. मैंने ऑलरेडी हीमोस्टैसिस का वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप उसको देख सकते हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज इट ऑल्सो रेगुलेट डिफरेंट इम्यून सेल ट्रैफिकिंग. यानी डिफरेंट कीमोकाइंस प्रोड्यूस करता है एंडोथीलियल सेल. सो मेनी वाइटल फंक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स. सो यहाँ पे मैंने एंडोथीलियल सेल्स के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको याद रखना है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. डैश इज अ merocrine gland, pineal gland, sebaceous gland, salivary gland, none of the above. So basically salivary gland is a merocrine gland. So what is merocrine gland? So basically merocrine glands उन glands को बोला जाता है, it is a type of exocrine gland. ये जो है वो exocrine gland का type है which secretes the chemical substances. यानी जो भी वो secrete करते हैं chemical दैट इज विदाउट डैमेजिंग देयर ओन सेल्स. यानी जो सिक्रीशंस होता है वो डायरेक्टली रिलीज होता है विदाउट डैमेजिंग दी सेल्स. यानी कि जो भी सेल्स होती हैं, अ सेल इज क्लासिफाइड एज मीरोक्राइन इफ द सिक्रीशंस ऑफ दैट सेल इज एक्सक्रीटेड वाया एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द सिक्रेटरी सेल्स इनटू एन एपिथेलियल वॉल डक्ट. और जो भी छोटे छोटे वॉल्स रहते हैं उनके थ्रू ल्यूमेन में अगर ट्रांसफर हो रहा है विदाउट डैमेजिंग और रप्चरिंग दी सेल. सो दीज काइंड ऑफ ग्लैंड्स आर नोन एज दी मीरोक्राइन ग्लैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. व्हाट डज इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स? नेटेल्स, कॉनिफेरल्स, जिंगोल्स एंड साइकोडेल्स. सो बेसिकली द नेटेल्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. यानी ये जो नेटम है इट बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म बट इट ऑल्सो हैज़ सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक विच इज resembling the characteristics of the angiosperm. So it acts as a connecting link between the gymnosperms and the angiosperms. I hope you liked the video. If you want more such videos, you can comment below. And thank you so much for watching.